Assalamu alaikum everyone. We're once again back with Utify webinar series, and today we have a very special guest with us. Mr. Ammar bin Saleem is currently working as an assistant manager marketing at LUMS. He's also an instructor at Near Peer, and he is one of the leading youth voices these days. And we are glad and honored to have you over here, Mr. Ammar. Thank you so much, Azizah. The pleasure is definitely mine. Thank you to be on your show. It's great First over thing, here. first thing first, Amar bhai, before digging down into today's webinar regarding single national curriculum and our discussions on digital education, the most Mhm. frequently asked question we have got about you is that our readers want to know, our audience wants to know about your academic journey. So before going into anything, just shed a light on that. So how did your academic journey start? what, what a precise question, I must say. You've got me off guard, I must tell you. क्योंकि अगर आप, if you want to learn about what the major, I mean, milestones I've achieved, of course, I can tell you. मगर वैसे ही मतलब बता दूं कि वही वाली बात है कि स्कूल के टाइम तक तो was never a wonderful student at all. मतलब पता नहीं क्या results आते होते थे. I mean, don't even want to recall. but but yeah, I did my O levels from Hamdard Public School. Then I went to a resource academia, which is now Lacoste. So I did my A levels from there. Then I joined FC College University, and I had two majors. So I mean, I majored in communications, and the other major was education. And once I was done with that, I started working at one of the projects at Beacon House, and then I mean, while I was working, I also started my professional MBA from Lahore School of Economics, LSE. So yeah, that I did, and that's pretty much it. Okay. As far as my education background is concerned, though, it's not yet. And you know we were on Instagram and we were on Facebook and we were getting this question that please ask his academic journey, and so we were like, we're going to ask this question first off as we start. As moving forward, the first thing that we would like to ask you, and we'll take your input on this, is a single national curriculum. A lot of news, a lot of views, a lot of ideas, and a lot of perceptions in the market. Of Could course. you easily break it down for our audience? What is the single national curriculum and how has the Pakistani public received it so far? I said this is a very broad topic. कि भाई single national curriculum क्या? There's been a lot of outcry on this कि यार मतलब किसने किस तरह से impact किया है. Not only students, not only the parents, but the teachers as well, administrators, everybody. And उस पे सबसे बड़ी बात है कि there is a lot of confusion कि भाई उस single national curriculum की implementation असल में कैसी है, ठीक है? So if अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब generally बताना चाहूँ कि भाई curriculum होता है क्या, so I would see it as मतलब एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करूँ, so I would see कि curriculum जो है, curriculum development is one of the things that you do to ensure that you have a good educational system in place. So it's not just curriculum, it is more than that. It also has assessments, it also has teacher training, it also means that you need to have good and comprehensive textbooks as well. So it's, I mean, when all these four come into play, then you can say that you have a good education system. So again, वो जैसे बात है ना कि भाई curriculum is one of the pieces in the education system. तो पहले तो we have to establish that. अच्छा, उसके बाद if you want me to decode a bit, तो मोटा मोटा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई जो गवर्नमेंट ने कुछ उसके अंदर चीजें की हैं, और जो खास तौर से मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा जो है ना मतलब जोल्ट किया वो ये कि previously we used to teach social studies and science as two different subjects, ठीक है, to for students in primary years, for students in early years. Government ने ये किया है कि ना कि सिर्फ इन दो subjects को they have clubbed it together, ठीक है, club both of these together. एक अलग से उसको एक subject बना दिया, उसका नाम है वाक़ियात आमा, और बल्कि उस पे एक रिस्ट्रिक्शन जो लगा दी है, एंड दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी फनी वन, कि उसको उन्होंने उर्दू में अब पढ़ाना है, ठीक है. सो अब टिल ग्रेड 3 वो सब्जेक्ट्स जो कि पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जो है इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे थे, और उर्दू मीडियम स्कूल्स में आप कह सकते हैं कि उर्दू में पढ़ाए जा रहे थे, नाउ दे आर बीइंग क्लब्ड, एंड नॉट ओनली के ये क्लब हो गए, अब आपको उसको पढ़ाना भी जो है उर्दू में, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट हैज कम इनटू प्लेस. और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वो सारे बच्चे जो पहले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हैं, जिनको हम इंग्लिश की तरफ लेके जा रहे थे, अब हमें उनको रोक के उर्दू की तरफ लेके जाना है वापस, ठीक है. सो जहाँ पे मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं टीच करता होता था तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उर्दू में आता था बच्चों को, और उसमें टीचर की कोई मिस्टेक नहीं थी. इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड, टू नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट.
अब उर्दू को सिर्फ एक सब्जेक्ट से उठा के आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर भी डाल दिया, तो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि असल में गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट जस्ट स्टॉपिंग ओवर हेयर, यू आर एक्चुअली एडिंग फ्यूल टू द कंफ्यूजन ओवर हेयर, ठीक है ना, टू द फायर ऑफ कंफ्यूजन। How are you doing that? Once they are done with grade 3, grade 4th onwards, they're going to do science in English. ठीक है, grade 6th onwards, they're going to study social studies in English. ठीक है, इसका मतलब है कि आप ग्रेड 3 तक कह रहे हो कि आपने उर्दू में पढ़ना है, then you're asking them to move to switch to English. अच्छा, अब जिस बच्चे ने आगे ओ लेवल्स करना है उसके लिए तो जबरदस्त किस्म की कंफ्यूजन पैदा हो गई है। ठीक है, मैं पहले उर्दू में पढ़ा, अब मैंने इंग्लिश में पढ़ना है। अब आगे अभी इन मार्च 2022 वी आर एक्सपेक्टिंग के 6 till 8 का करिकुलम आ जाएगा। मार्च 23 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 12 तक कंप्लीट करिकुलम आ चुका होगा। उस वक्त हम क्या करेंगे, कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने जो इंग्लिश के एग्जाम्स हैं फॉर साइंस, जो कि आगे फर्दर 3 ब्रांचेस बननी है एटलीस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, आप उनके एग्जाम्स उर्दू में लें। ऑफ कोर्स इट इज इम्पॉसिबल। या हम उनको कहेंगे कि पाकिस्तान स्टडीज और जो पाकिस्तान स्टडीज में ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है इनको उर्दू में लें। दैट इज, बोथ ऑफ दीस थिंग्स आर इम्पॉसिबल। तो वो ऐसे लगता है कि इन्होंने जो है ना काइंड ऑफ हरी में इंट्रोड्यूस कर। आई एम सॉरी फॉर द वेरी लॉन्ग आंसर। No, it is totally fine. But as an educationist, as a person working in the academia, working with universities, colleges, in your opinion, why do you think the PTI government is so centered towards bringing, uniformity in everything? Because, like in a diverse space like Pakistan, there are so many education systems going on. There is Cambridge, there is Federal Board, and there's so much. So what do you think is the prime motive behind this? As an educationist, what do you think? आई थिंक दे मस्ट हैव वांटेड कि यार हम इसको इक्वालिटी पे लेके आ सके। ठीक है, जो अब हमारा जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, हम उसको इंट्रोड्यूस कर सके, बिकॉज़ दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। ठीक है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दिस इज पीटीआई। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू गो ऑन एयर एंड से कि भाई आई हैव सपोर्टेड द गवर्नमेंट, बट आई हैव। ठीक है, मगर मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको डिसाइफर करके बता रहा हूँ आपको कि मे बी शायद दिस इज व्हाट द अंडरलाइंग आइडिया इज, इक्वालिटी। बट अगेन, when you are talking about equality, your whole paraphernalia doesn't allow you to maintain equity in the education system. Yeah. तो again वो जो इन्होंने promises वगैरह किए थे अवाम के साथ या वैसे overall मतलब सबके साथ कि हम जो चीजें introduce करेंगे, maybe this is one of those things that they are trying to do. ठीक है, maybe their intentions at heart are pure, but the way they are doing it and the kind of hurry they are in does not mandate this the introduction of the SNC right now, at least. And Ammar, the one thing that is coming out of it is this: that the implementation still remains at large at a question mark, because at various conferences I've heard that the private schools are not taking it in a very nice manner or in nice fashion. So where do you see that whole implementation game going? Do you think it's just you can say a bubble right now that is going on, or do you think it will be implemented in the long run? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन एज मच एज आई नो, और मैंने मतलब काफ़ी सारे जो इस वक्त एक्टिव एजुकेशनिस्ट हैं उनसे भी बात की है, कुछ टीचर से भी बात की है, स्कूल हेड से भी बात की है, एंड मुझे जो एक आइडिया वो ये है कि दे गोना फाइंड अ वे अराउंड इट। ठीक है, क्योंकि व्हाई वुड यू, अच्छा ठीक है, लेट्स टेक टू सिचुएशंस इनटू कंपैरिजन। ठीक है, एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, ठीक है, एंड उसके वालिदैन जो हैं वो 1000 रुपये शायद पे कर रहे हैं या कुछ भी नहीं पे कर रहे। On the other hand, somebody goes to a tier 1 school, ठीक है, जहाँ पे 45,000 rupees या 40,000 rupees जो आप पे कर रहे हैं। Why would a parent send his or her child to a private tier 1 school and pay 40,000 rupees per month when they can send their kid to a government school, which again is teaching the same thing? But the problem is कि implementation same नहीं है। आप बेशक strands आपके एक जैसे हो सकते हैं, you can say कि मेरा objective ये है, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में भी वही है और प्राइवेट स्कूल में भी वही है, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो कि मैंने सबसे बड़ा इसके अंदर जो एक लूप होल अंडरस्टैंड किया है वो ये कि दे हैव इशूड NOCs लाइक एनीथिंग। ठीक है, टू ऑल दीज बुक पब्लिशर्स, टू ऑल दीज बुक्स। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको थॉट आउट नहीं किया हुआ था प्रॉपर्ली, तो उनको फिर NOCs भी जो है वो देने पड़े, और मतलब प्रॉब्ली जल्दी में दिए। अब उसमें NOCs जो दिए उनमें ऑक्सफोर्ड की बुक्स भी हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स भी हैं, और भी अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स भी हैं, और गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है वो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक पढ़ रहा होगा या अपने रीजनल टेक्स्ट बुक की बुक जो है वो पढ़ रहा होगा।
तो जो ऑक्सफोर्ड की बुक आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, कैम्ब्रिज की बुक्स में हम लोगों ने पढ़ी है, उनकी एलैबोरेटिव अप्रोच, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की, वो जो एक कंडीशन में, एक सिचुएशन में आपको ले जाते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वुड डू टू अ सर्टेन बुक, ठीक है ना। तो वो उतनी इम्प्लीमेंटेशन तो वहीं पे आपकी फिर फेल हो जाती है। फिर सेकंड चीज है कि भाई टीचर्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगेन वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया, फोर एलिमेंट्स इसके हैं। अगर उसके अंदर टीचर्स ही प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, हाउ आर दे गोइंग टू मेक श्योर कि भाई जो गवर्नमेंट ने न्यू सिंगल नेशनल करिकुलम दे दिया हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो वो वहां पे सेकंड प्रॉब्लम हमें वहां पे फेस होएगा एटलीस्ट। And Ammar, there was a question that we received on Instagram, and I quote that question to you: that is every Pakistani government playing the experiments over and over again? Because a lot of people still think that whenever someone comes into the story or into the main limelight, they want their experiment to go on. So, as an educationist, do you think isn't it an irony over time that it's just been an experiment over and over again? देखिए, I wouldn't say कि many governments have try to experiment with the education system of Pakistan at matlab, if we have to talk about facts, the last time the whole single national curriculum was introduced, the national curriculum was introduced, was 2006, and it's 2021 now, when after 15 years with almost no revisions, ठीक है ना। तो Yeah. I wouldn't say that the governments in between ever considered it a priority, ठीक है। आज भी आप देख लें 2-3% जीडीपी का हमारे एजुकेशन पे लग रहा है, तो वैसे ही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कभी रही नहीं। या दे माइट हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग in other areas, but इस गवर्नमेंट ने असल में, क्योंकि वही चीज what they could have done in a better way, or maybe in a phased manner, not at least in the times when we are facing with COVID, when we are faced with a lot of problems, ठीक है, on top of everything else inflation, तो आपने उस वक्त ये भी इंट्रोड्यूस करा दी है। सो आई वुड से कि इन्होंने गलत टाइम पे एक सही चीज को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, एक गलत प्रोसेस को फॉलो करते हुए। We have a question from Abdullah over here, and he's asking, I think you have touched upon it before, but he's asking, do you think the discrimination will end between the government and private schools, or it will continue? Not at all. Not at all. It's a let and no. हो ही नहीं सकता। उसकी रीजन वही वाली बात जैसे मैंने पहले बताई, ठीक है। You can ensure कि with establishing strands, with all these objectives that you have established, ठीक है, you can say कि आप इस कोर्स को इस तरह से पढ़ाना है, आपने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, but you can never ensure with the kind of teachers you have right now, with the kind of infrastructure, the whole paraphernalia you have, कि वही टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में एक ही तरीके से एक चीज को पढ़ा रहे होंगे। डू दे हैव द सेम एनर्जी? नो। Are they getting paid the same amount of money? Absolutely not. Yeah. तो जब वो मोटिवेशन ही इन प्लेस नहीं है इवन फॉर अ टीचर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम और हर टू डिलीवर हर 100%? ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टीचर ट्रेनिंग क्या प्रॉपर है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, I'm not gonna name it, I don't know what's your policy on that, but I know that school has a certain policy, they're gonna have a number of trainings for you the whole year, ठीक है, and that helps you become a better teacher। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज है? नहीं। हम अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है, to some extent I agree with what was done at FTE a couple of weeks back, मगर अभी तक हम बात कर रहे हैं कि जी टीचर्स का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उन्हें शलवार कमीज पहननी, ये पहनना, भाई दिस इज समथिंग दैट स्कूल्स कैन डू एट देयर ओन एंड, ठीक है, लेकिन हम उस डिबेट से आगे ही नहीं आ रहे। सो आई डोंट थिंक कि ये मेंटेन किया जा सकता, स्टैंडर्ड नहीं है हो सकता। Okay, Ammar, there was a question, that comes on the sidelines of this, and that you have already like a little bit touched upon it, but there is also a difference of mentality that exists between the teachers of government schools and then in the private sector. Do you think that we're further cultivating that, or do you think there is some end to it? Because there is completely like two opposite sides of this pole at the moment. To some extent we can say कि यार ये अभी एक प्रॉब्लम है, बट आई बिलीव दिस कैन बी फिक्स। ठीक है, डिस्पैरिटी तो एग्जिस्ट करती है हमारे पूरे सोसाइटी के अंदर, सो व्हेन इफ इट्स टेकन रूट फ्रॉम द वेरी फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर इट गेट्स finished or gets reduced to a large extent, but again वो ही है कि मतलब there are many slips between the cup and the lips, अभी बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। और असल में वही वाली बात है ना, करिकुलम बनाने से सिर्फ ये चीजें हल नहीं हो जाती, आपने पूरा देखना है कि भाई कितने टीचर ट्रेनिंग आपने देनी है, कितनी उनकी रिम्यूनरेशन होनी चाहिए,
उन टीचर को असेस करने का क्या तरीका होगा, टीचर को इवैल्यूएट करने का क्या तरीका होगा। और एक दूसरी बात है कि एक प्राइवेट जो स्कूल के टीचर हैं और जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, उनके डिफरेंसेस को क्या आपने मार्क कर लिया है? डू यू हैव अ फ्रेमवर्क दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन? बिकॉज अगर फ्रेमवर्क नहीं है, देन आई एम सो सॉरी टू से, बट यू आर नॉट सीरियस इन एक्चुअली reducing the gaps that exist in the private and the public education in the country. And that in the end remains a dark reality. We have a question from Sana over here, and Sana is asking that would we ever be able to introduce SNC in our Pakistan properly, where private and government schools would be on the same page? I guess you have answered that, but still. Again, I mean, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, seems very difficult. वही वाली बात है ना कि how serious are we? I don't think we're serious enough. क्योंकि वो देखें, अगर हम serious होते हैं ना, I would have said कि there should have been consistency. There would have been consistency. Consistency नहीं है. अगर तीसरी जमात तक एक बच्चे ने उर्दू में social studies को और science को पढ़ना है, and then there is a stark difference, there is a sudden shift and you're going to do everything in English, तो there is no consistency. ठीक है. अच्छा, अब for example पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये तीन अब अपने मतलब ये जो अपने नेक्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट कर देंगे. What is going to happen when the next government comes in? ठीक है, is the policy going to stay the same, or they're going to come up with something else, something of their own? अब अगर वो दोबारा से आ जाए and they're gonna revert the changes, तो फिर क्या होगा? तो मुझे लगता है कि अगेन बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में कभी भी सिंगल नेशनल करिकुलम, देखिए अभी भी नहीं हो सका से. इट इज नॉट ए सिंगल नेशनल करिकुलम. व्हाई आर वी इवन सेइंग इट? सिंध हैज रिजेक्टेड इट. इट्स नॉट अ नेशनल करिकुलम. सिंगल नेशनल करिकुलम तब होता है व्हेन ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड अग्री टू इट, promulgate it, and implement it. It has not been implemented, although Sindh people were on board with the ones who were drawing the whole SNC, but they they opted out. So it's not an SNC by any definition. Okay, coming to the other part of our webinar today, Pakistan has seen you can say a surge of digital education since last 1 year, and universities and schools and colleges, they've been implementing the hybrid models and stuff. First of all, what's your take on that, and how do you think that it has been perceived by the students in general? Well, honestly, as someone who is an entrepreneur, as someone who likes to learn about education and all that we can do with technology, I am of the view that this is one of the most beautiful things that could happen in the industry, and it has happened. So, I mean, all those people who did not have access to education, who did not have access to, all these remarkable teachers who are teaching. I mean, there are many great teachers teaching on your platform. There are many great teachers who are teaching on Nearpeer's platform and many other organizations. So, अब उनको सबको access मिल गया. So, सबसे अच्छी चीज तो ये हुई, ठीक है. Second चीज ये कि भाई कोविड में हम किसी दौर में जब कहते होते थे कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलना, या ये चीज जो है अलाउड नहीं है, या हम उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो है रिलीजियस स्पिन देते होते थे, अब वो हमें खुल के हमारे सामने आ गई है. ठीक है, हमें कोविड ने अगर किसी चीज ने मेक श्योर किया है अल्लाह ताला के बाद कि हम लोग चलते रहें, तो वो मेरा ख्याल है ये सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी थी. ठीक है, डिजिटाइज एजुकेशन, फिनटेक, ऑल ऑफ दैट, सॉफ्टवेयर लाइक जूम, सॉफ्टवेयर लाइक दो जो भी सारे मीटअप सॉफ्टवेयर वगैरह थे, अगर ये सब ना होते तो हाउ वुड वी हैव कंटिन्यूड. तो एक तो ये चीज है कि भाई आई लव दिस ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम एज यू मेंशन्ड कि देयर इज अ सर्ज, there is this mushroom growth. ठीक है, everybody is opening up their own thing right now. हर बंदा एक digital school बना रहा है. ठीक है, and even somebody asked me to open up a digital school of my own. ठीक है, that is a good idea, but you know where the problem comes. Problem comes when we talk about sustainability. ठीक है, yeah, exactly. And सबसे बड़ा problem ये है कि we do not have enough resources to make sure that we are running sustainable operations. ठीक है, हम एक website बना देंगे, we can bring teachers on board, we can bring students on board, but at the end of the day, you need funding. ठीक है, in the very beginning, at least for most of the most of these education startups who are teaching online. यहाँ पे funding secure करना is a big thing, because at the end of the day, all of these are startups. Now there are good startups like Abab ने काफी सारा फंड किया, there are other organizations इन्होंने काफी ज्यादा फंड किए हैं, वो organizations जो हैं वो चल रही हैं for now, but you need support, you need government's hand over here. ठीक है,
For crying out loud, we have got 23 million people, 23 million school going children out of school. Okay? Yeah. 35% of the Pakistan's population is under age 15. Okay? So there is a huge market that exists over there. Government schools पे नहीं जा रहे लोग, नहीं जा रहे. 2 लाख स्कूल हैं, टोटल 3 लाख स्कूल हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर. 66% of the schools are government schools. 34% of the schools are private schools. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे जाते हैं वो कितनी है, उसकी रेशो बहुत कम. ठीक है, so this is a huge opportunity not only for people who are introducing these setups but for the government as well. And I think, Ammar, that it has been a blessing in disguise, because ultimately a lot of things have boomed in Pakistan, from education sector to you can see Easy Pesa, Jazz Cash, and Yeah. a lot of digital advancement is there. Ammar, the next question is like a very optimistic approach. Where do you see all of this heading to? Do you think, in the longer scheme of things, will it be sustainable for a country like Pakistan, where where the government is like, you cannot say a lot, but it's not that much inclined towards these things? So where do you see that going? देखिए, अब मुझे एक चीज तो उसके अंदर ये इर्तजा कि आई एम सीइंग अ कपल ऑफ चेंजेस एटलीस्ट. ठीक है, व्हेन यू इवन व्हेन यू टॉक अबाउट कि भाई हम हमारी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी क्या, सो यू कैन सी कि गवर्नमेंट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करी. दे आर आल्सो कीपिंग देयर बजट अ बिट फॉर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल चैनल्स. वही सारे लोग उनको भी थोड़े से पैसे वो जो है देना शुरू कर दिए. दे हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये जो डिजिटल जो हमारी जो एसेट्स हैं हमारे, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे गिव अस रीच लाइक नथिंग एल्स. ठीक है, तो एक तो ये चीज है. ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि अब आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है दे आर गोना इंट्रोड्यूस दिस थिंग, they're gonna hold the hand of all these people with edtech, all these edtech organizations. तो शायद कुछ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से मिल जाएगी, फिर कुछ फंडिंग आ जाएगी आपको प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह से. एंड जितना हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और जितने कम हमारे स्कूल्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू रिलाई ऑन edtech. दैट इज इट. ठीक है, आज नहीं कल नहीं, it's your loss, it's our loss together, but at the end of the day you're gonna have to rely on this. Otherwise there is no other option. It will be it will be a huge task to ensure कि भाई 100% of the people at a certain point in time are educated. तो वो without edtech नहीं हो सकता. But again the problem is कि right now, इर्तजा अगर आप अभी की बात करो, आपका शायद मेरे से इससे ज़्यादा आप इसमें जानते हो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ कहाँ पे है. We don't have internet facilities, we do not have infrastructure, we do not have the bandwidth, we do not have electricity. जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आप edtech को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. Yeah. And yeah, I couldn't agree more. As an educationist, Ammar, what is your message for the uprising youth in this? How could they find their opportunity in whatever is going on right now? But they have to make sure that they are looking for things all the time. First of all, they have to have a very positive approach. I remember it as when I was in my university, things were very different at that time. Us time I wasn't even teaching, of course I wasn't even earning, so things were very different at all these ends. And I remember I used to tell myself, okay, never stop believing. And the friends who would be watching my interview right now would agree with me. कि मैं ये बात कहता होता था to my own self, to my friends as well. ठीक है, and yes, it did turn out to be a wonderful thing to believe in a thing like that. ठीक है, आपने भाई कभी रुकना नहीं है, you have to keep moving forward. ठीक है ना, fall forward, जैसे वो डेंजेल वॉशिंगटन कहते हैं ना, fall forward. तो पहली बात तो ये कि you have to have a positive approach in your life, क्योंकि अगर आपकी positive approach नहीं है and you are this young कि आप 18 के हैं या 19 के, you are in your teenagers, late teenagers, और उसके बाद आप 20s में चले जाते हैं, if you are still maintaining a negative point of view of the world, you are going nowhere, man. That is not possible. Financial prosperity, prosperity in terms of health, prosperity in terms of your relationship with other people, I think it's almost impossible. So first of all, you have to maintain a very positive point of view about everything. उसके बाद you need to struggle. आपको हर वक्त कोशिश करनी है to do something better in life. If you are not giving this message to yourself, और मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात कह रहा हूँ, we have a tendency to be lazy. If we're going to stay lazy, not only are we going to stay behind
as an individual, but as a nation as well. जो हम पहले काफी पीछे रह चुके हैं. अक्सर मतलब पाकिस्तान के अंदर वो सारी चीजें जो कि यूएस में 30 साल पहले आ चुकी है, पाकिस्तान में 30 साल के बाद आ रही होती हैं एटलीस्ट. ठीक है, तो अगर हमने इसी स्पीड से चलते रहना, ऑफ कोर्स यही इंडिया होगा जो कि बेशक अभी इस वक्त हमें लगता है कि हम इंडिया को हरा देंगे और न्यूक्लियर वॉर होगी तो हम बहुत अच्छे उनसे, ये हमें हर जगह पे बीट कर रहा होगा. ठीक है, न्यूक्लियर इज नॉट द ओनली वे कि अब हमने इनसे लड़ाई की. ठीक है, सो दे गोना बीट अस एवरीवेयर और हम फिर पीछे रह जाएंगे. सो यूथ के लिए मेरा मैसेज यही है कि यार काइंड ऑफ मेक श्योर के even if you don't see anything right now in front of you, you are moving at least ahead. अपने आज को, अपने कल को अपने आज से बेहतर करने की कोशिश. Okay, and as we're moving towards the end, we have this fun trivia designed for you. It's a combination of questions that were asked from us, and we have picked up some of the best questions that we're going to ask you. And our first question in that regard is this: what is the one thing that you really like about lumps? What a question. What a question, huh? Okay, so the all right. If I am looking at LUMS as a student, the best thing is merit. ठीक है, whatever they say, that is correct. ठीक है, आप merit follow करते हो. Without merit, you can't even dream of getting in. एक बात है. As an employee, there are a lot of chances for you to grow. There are a lot of opportunities for you to grow. And they also, give you this autonomy to do things that you previously weren't doing, and that can actually add value. And the second question is, as an educationist, what is your go policy? I mean, like, what is your day-to-day attitude? I mean, as an educationist, how do you perceive things? If you just have to sum it up in a word or a sentence, it's up to you. Okay, so as an educationist, it would be different, but I can tell you what my aspirations are in one word as a teacher. Excitement. Okay. Creating excitement, inciting excitement amongst my students. That would be it. Without energy, without excitement in the teacher's voice, in the way teacher manages himself or herself, you cannot ensure कि आपके बच्चे जो हैं वो enjoy करते हैं आपसे. And our third question is basically related to your working with near peers. So we're going to give you an option between these questions because these two questions were asked many times from us. So we were like, Wow. चलो दोनों पूछ लेंगे और जिसका वो जवाब देना चाहें they can. The first part is कि 3 things that make near peer different from other educational institutes, and second, 2 things about Shahrukh Sawati that no one knows. So it's up to you which one you want to answer. So again, you have caught me off guard. I wish you had shared the list of questions with me. इल्तज़ाम मैं थोड़ा सा तैयार हो जाता अभी अगर शाहरुख surprising you. We're surprising you. Surprising me, of course. So, okay, so I haven't had the chance of meeting with Shahrukh for a lot of time. So I would say I would talk about the co-founder Ammar. Okay, I'm gonna go with that option. Acha. First of all, he's a very humble guy. Okay. So this is something that many people won't know. And if you meet with him the very first day, it might not even look like he is a humble guy, but actually he is very humble or bada maza aata hai unse baat karke. Secondly, he's too damn committed. Which is something you want. ठीक है, अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं लेके जाना है, you have to be committed, you have to be working around the clock, and he's that kind of person. And that I really enjoyed. Both of these traits actually helped me ease my way in at near peer, honestly. And finally, in this trivia round, we have the $1 million question that is usually asked in Pakistan. And I know this would be the hardest one to swallow for you, but at the end of the day, it's Lahore or Karachi. What's it? Oh, Lahore! Oh, come on, man! It's Lahore, all the way Lahore. All the way Lahore, all the time Lahore. But the people. What a question, man! I till last year I used to say Karachi is my second home. I would be in Karachi twice a week. Yeah. And Karachi is a lovely city. I don't know why people have such prejudice against this beautiful city of ours. It is as ours as Lahore is, as Islamabad, as Peshawar, as Quetta. But Karachi is a wonderful city. But at the end of the day, my heart is with Lahore. Although I was born in Peshawar, that I told you.
Yeah, so there is a portion And of my keeping heart up over with there. our tradition, as we invite every guest to our program, we would love that if you share a few messages for Team Theatify. What is your hope and ambition for us? We would love to know that from you. Okay, so again, the same thing. Do not stop believing. Just keep moving on. If matlab, I am sure there are going to be times in life where you're going to be faced with bottlenecks, where you're going to be seeing a wall right in front of you. But as you say, you have a wall of hope. So climb over it. ठीक है? मतलब, I'm sure you can ace all these challenges. And I have seen this concept happening to the best of my realizations. कि वाकई when you think positively, things start happening positively for you. So do not stop. There is so much that you are going to serve Team Tutify. Do not stop just yet. And with this, we would like to thank you, Ammar, for being such a generous guest today. It was wonderful talking to you about the single national curriculum and the digital advancements in Pakistan. And at the end, we would just like to say a few things over here that whatever the odds are, the future is always optimistic. Thank you so much for being here with us, and we're truly humbled and honored. And till next time, guys, when we come back, we're going to talk about the sustainable development goals. Till then, apna bahut khayal rakhiyega. Allah Hafiz, everyone. Thank you for having me.